Everybody, good to see you all. Are you guys getting into Christmas mood? I was just on an international call in the morning, and they were asking, "Do you celebrate Christmas?" I said, "In India, we like to celebrate everything. You can give us 2 more festivals, we don't mind." Right? Actually, we complain that there are some months where festivals are not there. Otherwise, we would love to have festivals every month, right? So she said, "Oh, you just had Diwali." I said, "No problem. We will have Christmas also, we'll have New Year also, and we will have some more. No problem." So are you guys getting into some Christmas mode? But not much. Yes, work. I mean, at least at the client end, a lot of people are planning their vacation. So we are regrouping. We might have some downtime in terms of deliverables, at least for the next 15 days. Do we have some Christian religion followers in the team? No. You should have. Diversity is very important. Anybody wants to convert? I had Christian friends in my workplace earlier. So it was good. We had Muslim friends, Christian friends from other religions. So every festival we used to get to celebrate. So Christmas used to be a good time to get some special cakes. Rum cakes, yeah, also from the previous organization. Yeah, it was really good. Okay, so don't worry, everybody. Dhruvin will manage that for you this time. Okay, so we have been talking about being professional, and there were 3 aspects of being a professional that we have looked at. Anybody remembers that? Yeah. Okay, go ahead. Yeah, one is the processes, one is presentation, and third is communication. Okay, so those are the 3 elements that we are working on, but I'm going back to the basic, which is what does it mean to be a professional, right? So you're right. Yes, a right answer to a different question. But let me please tell me, somebody, what are the 3 aspects of being a professional that we are looking at? Can I? No. Can I? Yeah. Communication, process, and presentation. Who's this? 1 second. Who's that? Who spoke right now? Vandan. Yeah, me. Vandan, I just said no to that. Okay, so, like that definition. Yes. What is the definition of being a professional? Professionalism is being highly competent, Yes. trustworthy, and respected. Respected, right? So that's the first line that we discuss in this workshop, right? So highly competent. Second is trustworthy, and third is Respected. 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 Yeah. We want you to know these 3 words the way you know your name. Because if you are not highly competent, if you're not trustworthy, you're not respected, you're not a professional. Like game over. So whatever you are doing, day in, day out, you do a lot of work, you do a lot of study, you're doing 100 things. It's all inside of these 3 elements. What are the 3 elements? Asti? Communication, processing, and presentation. Asti? Sorry, sir. Professionalism is being highly competent, trustworthy, and respected. Sorry, sir. What? You got lost in rum cake? Yeah, sir. Little bit. Don't worry, Dhruvin will give you. Okay. So let's have Dhruv. What are the 3 elements of being professional? Being highly competent, trustworthy, and respectful. Respected. Respected, yeah.
Yeah, we should also be respectful. I agree, but as a professional, we also want to be respected. Like we have to be that good that people want to respect us naturally, right? And then, what was the second element we said about? We talked something about what should happen with the dignity. Remember, there was some element of dignity conversation. What was that? Anybody? Anybody remembers? Dignity of what you are associated with. Yes. What should happen to the dignity of what you are associated with? So you have to add value to that and upholds Yeah, the dignity. yeah. As a professional, you uphold and add to the dignity of whatever you are associated with. Like we discussed last time that if you are associated with a college or you're associated with your family, you're associated with the company, people's perception of that, whatever you're associated with, that should go up. Oh, Krupa is associated with this company. That means this company should be good. I can trust this company. Why? Because Krupa is working here, right? Or Viraj is working here. So your credibility is so strong that it adds to the credibility of whatever you are associated with. Okay, do you understand what I'm saying? Now, it may not be true right now for many of us because we are in the starting stages of our career. Some of us are in the starting stages of our career, but that is the direction that we want to go. That is the aim, right? That we become so strong that wherever you go, your value has a rub-off effect on whatever you get associated with. Okay, good. And then last time we looked at these three components that many of you mentioned: communication and processes and presentation. So please share with all of us here, what have you done in this last week to plan or to improve or to start thinking about how you can improve your communication, how you can improve your processes, how can you improve your presentation? Anybody? You'd like to start? What have you done? What have you thought? Any thoughts you have had about how do you improve your communication? Where do you want to improve? Where should we improve as a company? We had also looked at three aspects of what manager expect from us, what clients expect from us, and what client expects from the company, right? So let's look at from a communication perspective. What does manager expect from us? What does client expect from us? What does client expect from the company? Any inputs, anybody? Except Dhruvid. Nirmal, you want to start? I just missed the particular wording, so I So mean, we are looking at three aspects, right? Communication, process, right. and presentation. And we are looking at improving ourselves. And for that, we are looking at how what managers expect from us, what customers expect from us, That's and true. what customers expect from the company. Not just from us as individuals, but from Regent as a company, right? So, Right. do you have any inputs?
The one of the important parameter was quality that I believe client expect, and as a manager, No, he, so yeah, so quality, okay, fine, go ahead. Let's first you go ahead, then we'll see from these three aspects. So one is yes, quality, and manager expect a timely delivery. I mean, whatever the task is assigned, it needs to be delivered on time. I mean, and as a client that expect from the company that can be the best optimized solution. I mean, within their budget and within the timeline. So okay. So now whatever you just said, right? You said quality, you said optimized timely solution delivery. and timely delivery, right? Now Right. look at it from these three angles: communication, process, and presentation. So let's talk quality. Can customers experience that you are giving quality without you having proper communication system? No, without So it's communication. suppose you are suppose you are a engineer and you are doing lot like wonderful coding, wonderful whatever software you're developing, but your communication is pathetic. Is the customer going to think you are giving high quality? No, Or you don't communicate at all, right? It's like you are on Monvrat. Is it going to work? no, it's not going to work. Or if customer has to follow up with you, hey, what is happening? What is happening? And you're saying, listen, I am on Himalaya, I am doing deep meditation, and I'm going to give you world-class product, but don't disturb me in between. Is that going to work? No, not at all. Okay, so I'll just add one more line in our discussion. And this is very important for engineers, especially. Perception is reality. Somebody translated in Gujarati and Hindi. Perception is reality. किसी को आता है हिंदी गुजराती अच्छा? हम जो सोचते हैं दृष्टिकोण वही है हकीकत वास्तविकता है। होती है। धारणा है वास्तविक। ओके, परसेप्शन के लिए और क्या क्या शब्द है? अनुमान। मनोधारणा। Okay. See, I'm saying when a customer creates a perception about you, right? Or a customer creates a perception about a brand, about a company. So in that, when you look at from that context, what does the word perception mean in Gujarati or Hindi? Yeah, I think Vandan said dharana, the first thing, right? Okay. That is something simple to understand. Okay. Also. Yeah, that's a good word. Do you have some other alternative words? Perception. What is the word for impression? Impression को क्या बोलेंगे? Chap. छाप छोड़ना। Right. Okay. Image. Image को क्या बोलेंगे? Image. हिंदी पूछ रहा हूँ, इमेज का हिंदी क्या? चित्र। छवि। छवि, okay. So these are all good words around it, right? So whatever छवि, whatever image, whatever chitra you are leaving on the customer's mind, that is the perception, right? And that perception is reality. Nobody has any time to find out reality. Nobody has any access to find out reality. कस्टमर के पास या किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि रिसर्च करके आप कितने महान हो उस पर रिसर्च करके वो ढूंढ निकाले कि आपने क्या क्या महानता है, right? Does anybody have time to find out how great you are? Nobody has time, right? So if you want that they should know that you are great, whose job it is to communicate that?
किसका काम है उनको ये बताना कि आप ग्रेट हो? Ours. हमारा? Yes, no? Is it your job? Yes. Yeah. But the problem is, if you tell them you are great, then they will know you are not great. Right? जो भी बोलता है कि भाई मैं महान हूं, तो सब लोग समझ जाते हैं कि भी ये तो डब्बा है, right? Then how do you communicate that you are great? By By doing communicating, what kind of work? By our work. yeah, by communicating your work. Not by your work, by communicating your work. Of course, you have to work. That is understood. That I am not training you. You are all engineers, and there are a lot of other places from where you will learn your engineering. I am not teaching you in engineering, right? I am talking about whatever you do, how do you communicate so that people can see that you are highly competent, people can feel that you are trustworthy, and people can respect you. How do you communicate that? So when you're working on projects, right, what are the various aspects of communication that you need to take care of? Okay, let's go deeper, right? How many of you fill up daily timesheets? Okay, and how many of you send daily reports to customer of the work done? Okay, only 5 people send that. Okay, now if you read those reports, is it communicating the work properly? Do you do enough thinking around how you communicate? Or is it just like a tick mark activity? I wrote some report. Because that report that you send is almost as important as the work you do. Right? Now, if you're a marketing person, a salesperson, you understand this very easily. But as an engineer, you may say, no, it cannot be. My work is much more important than my communication. And you are right in a way. 90% of the cases, you are right. But still, if you operate from perception is reality, right? Then your communication is as important as your engineering. And it's not fair, but life is not fair. World is not fair. Okay, so let's not fight about how the world should be. But let's start looking at it. If you look at our everyday communication with your manager, with your client or client representative, is that communication thoughtful? Are you thinking about it? Or are you doing it mechanically? Are you doing it in a way that will create the impression that you are highly competent, you are trustworthy, and you are worth respecting? So let me ask you, tell me what is the report that you sent yesterday? If you want, you can open your document and read it out. Anybody? What report did you send yesterday? Look at your document. आपने कल के दिन में क्या क्या communication किया? What are the communications you have done yesterday? Viraj, did you do any communication yesterday with your manager, with your client representative? Anybody? क्लाइंट के साथ तो नहीं हुआ है बट मैनेजर के साथ हुआ है. Okay, what did you communicate? So actually I communicate regarding the scalability test for particular module regarding our upcoming project. Okay, so what did you say? Did you do it verbal communication or written communication?
Verbal communication. Okay, good. What did you say? Who is your manager? Harsh. Harsh. HK? Yeah. Okay. No, because you have three Harsh, no? That's why. Okay. So what did you tell him? ऐसा तो कुछ अभी ऐसा पर्टिकुलर वे में याद नहीं है क्या क्या है, बाजू में ही तो बैठते हैं तो फिर आप फिर भी क्या try to remember. I know you may not remember 100%, but see what's the best you can remember. क्या बोला था? गुजराती में बोला था, हिंदी में बोला था, इंग्लिश में बोला था? गुजराती में बोला था बट हाँ, क्या बोला था? ऐसा अभी सर याद नहीं है कि Okay, क्या let's बोला ask था Harsh, क्योंकि right? Okay. Let's ask Harsh. So as he told, like JCCB, the three module table, JCCB, JP, and JCCH, Hmm. the data is being loaded, Hmm. and this much, the whatever counts was there, he has told me. And then when I left, given him a task that change this value in the particular file and then update me how it is go. So he messaged me then he told me like Harsh bhai, this I have updated the data even though, and I try to validate it even though it is giving error. So that was his communication for your from yesterday's work. Okay, good. That's a normal communication, right? That's how mostly people are communicating, right? Yes, yes, This is yes. the standard communication. So now let's go back to the first communication. What did you say? The the modules tables, three tables, the data is being loaded, Right. and particular some numbers are there, 10,000 or 5,000, the numbers were there. So that numbers are being loaded from the file into the table. That was the first part. And the second part, when I left, I given him a task No, don't go to the that update. don't go to the Yeah, second. okay. Let's just look at the first part. So this is looking like a standard communication, right? Everybody, do you agree? Now, how can we add some more value in this communication so that it demonstrates our competency and our trustworthiness and can earn some respect? So So Viraj, let's first start with Viraj and then I'll give chance to everybody. So Viraj, yes. what do you think? What can you communicate? How can you communicate differently? There is nothing wrong with what you said, right? But just let's think of how can you communicate differently? Mm, What is the background thinking that you did before this communication, and what is the background work that you have done that you are trying to showcase here? क्या काम किया था आपने? ये जो भी आपने रिपोर्ट दिया उसके हाँ पीछे आपने क्या काम किया था? मीन्स पूरा फ्लो अभी बताऊं लाइक हाँ, थोड़ा शॉर्ट में. हाँ शॉर्ट में. सो बेसिकली ये जो 3 मॉड्यूल है ना उसके हमको स्केलेबिलिटी टेस्ट करना था. तो उसके हिसाब से 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स है. जॉब कॉस्ट, जॉब बिलिंग, परचेस ऑर्डर एंड अकाउंट रिसीव्ड और Just talk अकाउंट about पेड. job cost. अगर ओके जो जॉब कॉस्ट शॉर्ट के में बारे में जॉब कॉस्ट तीन टेबल. हाँ, वही जो हाँ हमने कल काम किया. हाँ तो जॉब Let it कॉस्ट be. Let him speak. Yeah. Go ahead. जॉब कॉस्ट के Okay. 3 टेबल है जिसके लास्ट यस्टरडे हमने काम किया था. जेसीजेपी, जेसीसीएच एंड जेसीसीपी. सो उसमें हमने स्केलेबिलिटी टेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स लिए थे. कुछ टेबल में 10 के रिकॉर्ड्स थे, कुछ में 17 के रिकॉर्ड थे. तो उसके बेसिस पे हमने उसका डेटा लोड किया था. Okay. Good. And
What is the problem you are trying to solve here? प्रॉब्लम इज लाइक डेटा लोड हो जाता है बट उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना प्रोसेस बैच को प्रोसेस करने का उसमें कुछ इश्यू आ रहा था एरर आ रही थी नहीं भाई, ये जो भी आप काम कर रहे हो, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? नहीं, ये अभी बर्ड डेटा कन्वर्जन करके प्रोजेक्ट है जो पीओसी फेज में है अभी. ओके. So यहाँ पे problem statement is that whenever we have already given the POC for one record, one job, okay, but now they want to taste it in a bulk. So they want to note it down the timings, like how much it is taking when the data is being in a bulk, so that they can get to know like if it will take more time when 1 million record will come. So how much the timing will be there in terms of performance. Okay. Right. That is the scalability testing he's talking about, right? Yes. But what is this project? It is data conversion project. So from on-prem server to the cloud, they are migrating. Okay. And what is this data? And in migration, this data is about the civil engineering, means in their construction companies data is there. So they are also consultant for their customer. So they are managing their data, and as well as they are providing the resources like engineers and laborers and all, and their jobs and their work and everything they are maintaining into their systems. And in terms of, and from that they are doing the work. So and there for them they are creating orders, they are creating uh, their jobs, their salaries, their labor salaries, everything. They guys are managing. This is the whole bird data conversion, construction companies there in the Canada. Okay. Right. Okay. And Viraj, do you know all this? yes Okay. Got that. Good. So now let's open the floor for everybody. What do you think? How can we add more value in this communication? Give some more detail about the task and explain. Okay. Somebody else? Also, we can attach some proofs like whatever the values we are getting, we can provide the screenshots and all. Okay. Good. Somebody else? Add to number of record we have for the particular year, which we have already. Okay. So we can mention the problem statement first, and then we can mention like what the precautionary step we have taken for it. Okay. Good. Somebody else? So we can communicate whatever the subject matter may be. The communication should be enough for the other person to understand that you've given some thought beyond trying to solve the problem once, and you have information and clarity around what you are going to do next to make it faster and better. Okay. Right. Okay. Good. Harsh, what do you think? Yes, How can he communicate to you that you are left with, oh, wow, this guy has done some real thinking. This guy is doing some extraordinary work. yeah. So in terms of that, as I know the project, there should be two things which need to be added more here. So one is whatever test we have done, we have noted down and we have done some manual works, so that we have to communicate to the client as well. So in terms of document, we need to note it down and share it to that. So Okay. that can be added. Yeah. And so second thing, whatever we have done, we need to step by step everything need to write it down every time. That in terms of we are also lacking. So if Yeah. we eventually are doing mostly verbal, but we should note down it and we should share it to the whoever, even the manager, even the client.
So Yeah. even though it is a simple thing, but it should be. So that two things I think we can improve. Brilliant. Brilliant. So now everybody, can you see that if you start thinking, there are ways to improve your communication? I'm not saying do this, do that, but if you start getting more conscious about it, do you see you can improve your communication? Viraj? Yes, sir. And can you see that that communication will have significant impact on how people experience your competence? Yeah. Right? And that is what is going to create your impression. Right? So, so we have to watch out for we taking communication lightly. Start, everybody, my request is, even though it may not be that important, but right now, start looking at communication as almost as important as the actual technical work you are doing. For the next 3 months, my request is take your communication at least as important as your technical work. Can you do that? So you see, when you're doing your technical work, you must be doing a lot of thinking, right? In the same way, here, you also must have to do, oh, what do I need to communicate? What is the client looking for? What will give him the confidence? What will give him peace of mind, him or her, right? What will make them put blind faith in me? We want our customers to put blind faith in us, but we have to earn that. And it will not happen only by your technical competence. Of course, it's very, very, very important. I'm not trying to undermine it in any way, but I'm trying to say that along with your great work, if you add great communication, it will have much bigger impact. Okay. So whatever suggestions people give, you can start thinking from that and look at every communication. It's like in college, you did projects, right? And then you had Viva, right? If you know that Viva and the presentation that you did was as important as the project itself. And some people were good at presentation and some people did not care much about the presentation. And if it was the same project with great presentation and same project with lousy presentation, you know the scores will be different, right? So one aspect is your communication about every work that you do. It should be on time, right? So you make sure that every day you are sending your updates to the customer and to the manager, right? Now let's look at another aspect of communication is actually knowing the project, knowing the work we are doing. Are you able to hear me clearly? Okay, good. So let's talk to somebody else. So Pooja, what is the project you are working on? I can't hear you. Hello. Yeah, what is the project you're working on? Fiji reports. Okay, what is it about? It's a bank related project. Okay, good. Go ahead. हाँ, इसमें बैंक रिलेटेड जैसे कि बैंक का जो डेटा होता है क्रेडिट लोन वो सब हम उसमें रिपोर्ट में हम क्रिएट करते हैं उसका और उसके बाद उसका रिपोर्ट जनरेट करके हम पेंथा टूल से उसके अंदर क्वेरीज क्रिएट करके एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और वो HFC बैंक फिजीलैंड HFC बैंक ओके हाँ बस कंटिन्यू क्या है प्रोजेक्ट ये हाँ ये मतलब ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जैसे कि ये इसका डेटा टीसीएस उसका डेटा हमें प्रोवाइड करती है फिर हम वो डेटा को क्लीन करते हैं फिर उसके बाद उसमें क्वेरी लगाते हैं और उसका रिपोर्ट क्रिएट करते हैं पहले वो ऑटोमेटेड था
तो उस पहले मतलब मैनुअली वो रिपोर्ट क्रिएट करते थे एक्सेल में, बट हम उसको ऑटोमेटेड कर रहे हैं एक्सेल पेंथाओ से। ओके। और तो उससे क्या फायदा हो रहा है कस्टमर को? कस्टमर को जो पहले मैनुअली करते थे वो अब ऑटोमेटेड करते हैं, तो वो एक्सेल सीट उनको डायरेक्ट जो भी डेटा मतलब उनका क्रेडिट डेबिट जो भी हो वो उनको क्लियरली मिल जाता है। तो उससे आगे बेनिफिट क्या हो रहा है? उससे बेनिफिट ये हो रहा है कि अभी तो ऑन द प्रोसेस है, तो इसका ये क्या बेनिफिट होगा? हम्म? उनको क्या बेनिफिट होगा, या अभी क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं? अभी तो उसका हम लोग रिपोर्ट ही जनरेट कर रहे हैं। हाँ, पर उसका बिजनेस बेनिफिट क्या होगा, या बिजनेस प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं आप? उसका टाइम सेव होगा। ओके। और फिर ये क्या 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 डेटा निकालते हैं उसमें से? उसमें से बैंक का डेटा सब निकालते हैं। नहीं, व्हाट काइंड ऑफ डेटा? ये लोगों की क्रेडिट वर्थिनेस का डेटा निकालते हैं कि भाई, और उससे डिसीजन क्या लेते हैं? ये ये डेटा कहाँ यूज होता है? किसी डिसीजन में यूज होता है? किस चीज के लिए यूज होता है ये डेटा? ये HFC बैंक रिलेटेड इसका इसका डेटा यूज होता है। आप किसको रिपोर्ट करते हैं ये प्रोजेक्ट में? चंदन। चंदन, चंदन आप इधर हैं? यस सर। हाँ, तो थोड़ा बताइए ये प्रोजेक्ट के बारे में कि ये कस्टमर का क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली जब ये प्रोजेक्ट आया था ना, तब ऐसा कुछ हमें बोला नहीं था कि ये इशू है। एक्चुअली देखो, उनको बस ऑटोमेट करना था कि जो रिपोर्ट्स है ना वो उनके पास ऑटोमेटिकली मंथली और ईयरली है ना, या डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट्स है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वो उनके पास मेल के थ्रू पहुंच जाए या मैनुअली वो लोग जनरेट कर सके। तो अभी के केस में क्या है, वो मैनुअली सब कुछ डेटा एंटर करते हैं एक्सेल में और उनका सब कैलकुलेशंस करते हैं। तो अभी उन्होंने टीसीएस का था तो टाइप वो सब करके रखा है कि डेटा सोर्स उनके पास रहेगा। तो जो डेटा उनके पास आ रहा है टीसीएस में, तो वो हम उसको यूज करके ऑटोमेट कर सके ताकि उनका टाइम भी बचे और उनको बार बार वही सेम चीज प्रोसेस करनी ना पड़े मंथली। तो उनको सपोज प्रीवियस मंथ का भी अगर निकालना है, तो वो जस्ट एक फिल्टरिंग के थ्रू रन करेंगे रिपोर्ट्स, उनको जिस मंथ का निकालना होगा रन का रिपोर्ट मिल जाएगा उनको मैनुअली, विद इन अ सेकेंड उनको मिल जाएगा। और और दूसरा है, किस टाइप का रिपोर्ट होता है ये जैसे लोन्स के अपने डिटेल्स है, लाइक कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी बचा हुआ है उस मंथ में, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं उनके पास अभी करंटली एक्टिव है और कितने नॉट एक्टिव है, ये और कितने क्रेडिट हुए हैं और कितने नए लोन्स लिए गए हैं इस मंथ में या एक साल के अंदर, और कितने लाइक लोन्स है तो उसमें कितने इंडिविजुअल लिए गए हैं, पार्टनर्स में लिए गए हैं, और कौन कौन सी एमएनसी कंपनी, सपोज एक रेंज है उनके एंटरप्राइज का कि स्मॉल मीडियम रेंज इतना कितना है, तो उनके कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसमें कितना लोन्स है, इस टाइप की डिटेल्स है उनकी पूरी। और ये लोन कौन इश्यू कर रहा है वो भी है? हाँ, लोन इशू कौन कर रहा है पूरी डिटेल नहीं है, जो डेटा जितना हमको प्रोवाइड हुआ ना टीसीएस की साइड से राइट। कि ये कस्टमर का है और ये कंपनी का है सपोज, उतनी हम्म। डिटेल हमारे पास है, हम वो नेमिंग देते हैं वहाँ पे। राइट। पर ये डेटा से या ये रिपोर्ट से फिर आगे क्या करते हैं कस्टमर? टीसीएस क्या करता है और कस्टमर क्या करता है? टीसीएस जैसे ना उनके पास डेटा आता है, जैसे हम्म। उन्होंने कोई लोन लिया कस्टमर का, तो उनकी हम्म। जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं पोस्टग्रेस के अंदर, हम्म। कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होगी। अब वहाँ से आपको जो बनाना, डैशबोर्ड बनाना, अभी डैशबोर्ड का भी स्टार्टअप करना है इसमें, तो डैशबोर्ड से उनको एनालिसिस करना होगा कि हम्म। इनका क्या है, और वो सब उसके अकॉर्डिंग है ना अपना वर्कलोड कम कर सके और जो पर्सन है ना वहाँ पे थोड़ा ध्यान दे सके। और जो किसी को रिपोर्ट्स अगर सपोज हमको भेजना है ईयरली किसी का, कि अभी लाइक सपोज रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या है उनका, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है, एफजेडी टू यूएसडी में क्या है, यूएसडी में क्या है, ये करेंसी कन्वर्जर्स क्या है, तो उनकी पूरी एक डिटेल रहेगी उनके पास। और अभी के इंटरेस्ट रेट क्या है और एक साल तक का इंटरेस्ट रेट कितना है, और वो सब की डिटेल्स है, क्या फिक्स वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है, तो उनके अकॉर्डिंग। और ये डेटा कौन यूज कर रहा है? डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं अभी टीसीएस में, नहीं, उन्होंने जो भी माइग्रेट किया है। जो भी आप ये डिजाइन कर रहे हो ऑटोमेशन, उससे हाँ, जो रिपोर्ट जनरेट होगी राइट, वो कौन यूज करेगा? वो एचएफसी बैंक यूज करेंगे। हाँ, बैंक में मैनेजर्स यूज करेंगे, हाँ, टेलर्स यूज उन्होंने मल्टीपल्स करेंगे? यूजर्स दिए, हर एक यूजर का अलग अलग रोल है। टोटल अभी 45 रिपोर्ट्स है,
तो टोटल रिपोर्ट्स को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि इतना पार्ट है ना ये पर्सन को है, ऐसा है। तो वो फिक्स नहीं है मैनेजर लेवल पे, और ऐसा नहीं है। 45 रिपोर्ट्स है। हाँ 45 रिपोर्ट्स है, उसके अंदर भी मल्टीपल सीट्स है उन 45 रिपोर्ट्स के अंदर। वेरी गुड। तो ये आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको सारे 45 याद हो, बट कैन यू टेल मी सम ऑफ व्हाट आर द रिपोर्ट्स अबाउट 45 रिपोर्ट्स मींस गिव सम 45 एग्जांपल। हाँ, एक रिपोर्ट है जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का है, ओके जिसमें पूरा एक्सचेंज रेट की डिटेल्स है। और ओके एक रिपोर्ट है जो ईयरली, 2 रिपोर्ट ऐसा है जो ईयरली है पूरा। उसमें उनके 2 अलग-अलग प्रोडक्ट्स है, क्रेडिट प्रोडक्ट्स कौन से हैं और सेविंग प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं, उस प्रोडक्ट की इंटरेस्ट रेट कितनी है, अलग-अलग उनकी जो कॉपीज़ होती है ना उसको उसके अकॉर्डिंग है, एसपीएफ 3 बोलते हैं उनको। उनके बेसिस पे उनकी डिटेल्स है कि अभी का इंटरेस्ट रेट कितना है इस ईयर में, और उसमें फ्लोटिंग कितनी है इंटरेस्ट रेट, वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है, ये सारी डिटेल्स है। उसमें चार्जेस कितने लगते हैं, मंथली चार्जेस क्या है, और सारी डिटेल्स है इसमें। फिर दूसरा है जो आउटस्टैंडिंग लोन्स का है, कि राइट अभी तक कितना आउटस्टैंडिंग लोन, उस मंथ में कितना आउटस्टैंडिंग लोन पे किया गया है, उसकी डिटेल है। और उसमें उसी मंथ में उसी रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा है कि कितने नए लोन्स लिए गए हैं, ये डिटेल ये है। फिर दूसरा डिटेल है कितने नए कस्टमर आए हैं उस मंथ में, और कितने नए प्रीवियस कस्टमर थे जो उन्होंने नया लोन लिया है। वेरी गुड ठीक। और फिर दूसरी डिटेल है कितने नंबर ऑफ अभी एक्टिव ब्रांचेस है, वो है। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ कितने उसमें अमाउंट हुए थे वो पे किया हुआ है। फिर उसके अंदर से अलग पेमेंट्स और रिसिप्ट है, कितने पेमेंट्स हुए हैं अभी टोटल अमाउंट तक, वो वीकली रिपोर्ट है। वो 5 डेज का वर्किंग उनका रहता है, तो 5 डेज का वर्किंग में कितने पेमेंट्स अभी करंटली हुए हैं वो 5 दिन में, वो है। उसके बाद है उसमें उनके अलग-अलग कन्वर्जन है, सपोज़ नेट क्लोजिंग है और नेट ओपनिंग बैलेंस है। तो अपना लास्ट मंथ का लास्ट डे का कितना ओपनिंग था उसके अकॉर्डिंग कितना नया क्लोजिंग आया है, कितने नए अमाउंट आए हैं, वो है एक तो अमाउंट में। फिर दूसरा कितना रीस्ट्रक्चर हुआ है पेमेंट, मीन्स रीपेमेंट्स हुए हैं उस मंथ पर्टिकुलर मंथ्स में, एक उसकी डिटेल्स है। तो इस ब्रिलियंट टाइप की डिटेल्स है। excellent. So everybody, just as you heard Chandan speak about all this, what did you learn? Any learning for you? So every team members who is were learning in the part of the project what they are doing, or in deep manner they should understand, and they should try to understand the business requirement, and in terms of how, if we are the business person for them or we are working for them, how we will utilize these things which we are developing. So in terms of that we need to do the thinking. Okay, good. Somebody else? कितने लोगों के लिए चंदन ने जो बोला, जितने डेप्थ में सब बोला, वो नया था? इट वॉज न्यू फॉर यू? एनीबडी? ओके, गुड, वेरी गुड. सो लेट्स हियर फ्रॉम यू. क्या कमेंट है उसके बारे में? क्या नया दृष्टिकोण से देख रहे हो आप? Can I say something? या So there is no doubt in my mind that Chandan knows the project in and out, and he has enough clarity on what we are doing and what we are trying to achieve. So that is a very important thing in building trust. Like if I have any questions after this explanation about that project, I am sure I'm going to go to Chandan to get okay, clarifications or get ideas on anything similar as well. yeah, very good. Pooja, where is Pooja? Okay, Pooja, come back. या क्या आपके ये प्रोजेक्ट के बारे में आपने अभी सुना? हाँ. कुछ नया था आपके लिए? नहीं, लेकिन ये इतना मतलब डिटेल नया तो नहीं था, लेकिन मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया.
जमीन आसमान का फर्क है ना एक्सप्लेनेशन में। हाँ आता तो आपको भी मालूम था, हाँ राइट? पर हम तो कम्युनिकेशन थोड़ी करेंगे, हम तो इंजीनियर है, हैं? नहीं, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अभी आप इमेजिन करो कि भी आपने जो काम किया है और चंदन ने भी सपोज वही काम किया है, राइट? हम्म। और चंदन इस तरह से कम्युनिकेट करता है, तो किसकी इंप्रेशन अलग पड़ेगी? चंदन की। और कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी रहेगा? चंदन। काम तो दोनों ने सेम किया, बट कम्युनिकेशन इज डिफरेंट वे। और फिर कस्टमर रिस्पेक्ट किसको ज्यादा करेगा? चंदन। और आपको कौन सा काम मिले आपके रिपोर्टिंग के हिसाब से, आपने जैसे रिपोर्ट किया था उसके हिसाब से आपको किस टाइप का अगला प्रोजेक्ट मिलेगा? रिपोर्टिंग क्या है? हाँ, और चंदन को कैसा प्रोजेक्ट मिलेगा? उसको एडवांस्ड। हाँ, उसको बैंकिंग का कोई भी काम मिलेगा। बोले ये तो बैंकिंग एक्सपर्ट है। अच्छा, पूजा क्या है? पूजा रिपोर्टिंग एक्सपर्ट है। और चंदन क्या है? वो तो बैंकिंग एक्सपर्ट है। बैंकिंग का कोई भी होगा तो चंदन के पास जाना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और चंदन को मिलेगा बैंकिंग प्रोजेक्ट, और दोनों का प्राइस टैग अलग होगा ना, दोनों प्रोजेक्ट का। आप समझ रहे? तो अगर रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट है उसका अगर एक्स प्राइस है, तो बैंकिंग का प्रोजेक्ट जो है ना उसका 50x प्राइस होगा, ओके। कम से कम। और दोनों ने टेक्निकल तो वही काम किया था। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग पूजा? यस सर। दोनों की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी वही है, दोनों ने काम भी वही किया था, प्रेजेंटेशन अलग हो गया। 5 साल में दोनों की ट्रेजेक्टरी कंप्लीटली अलग हो जाएगी। थैंक यू। विपुल, कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें? यस सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके ऊपर से। बोलिए बोलिए। जब हमें टास्क असाइन होता है हम्म तो थ्रू मैनेजर होता है, हम्म क्लाइंट हमें बताते हैं उस टास्क में हमें कुछ डाउट रहते हैं तो हम क्लाइंट को पूछते हैं। जो भी क्लाइंट हमें बताता है तो हमें लगता है कि इसका डिफरेंट वे हो सकता है, डिफरेंट एंगल्स। राइट। तो हम क्लाइंट को पूछते हैं कि कितने एंगल से, कौन कौन से विजन से आपको डेवलप करना है। तो मेरे केस में एक फीडबैक मुझे मिला है कि आप क्वेश्चन ज्यादा करते हो। जब डाउट होते हैं तो हम पूछते हैं कि डाउट तो क्लियर होना चाहिए डेवलप करने से पहले। तो मेरे केस में हो रहा है कि आप क्वेश्चन ज्यादा करते हो। हम्म ये पॉजिटिव में मिला है, नेगेटिव में आई डोंट नो, लेकिन जो हम करके देते हैं बेस्ट करके देते हैं। तो उसके लिए जो हमें देना है तो बेस्ट देना है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं कि किस किस वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, पर हाँ, आप सही हो। आ, तो अभी अभी आपका क्या क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं है। तो इसकी वजह से फीडबैक मिलता है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं, तो यही फीडबैक है मेरा हाँ, कि क्वेश्चन जब तक डाउट है तो डाउट क्लियर करने से आगे तो पहले हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। राइट। तो आप जो कर रहे हो वो सही है। यू शुड आस्क क्वेश्चंस, ओके? आई वांट एवरीबॉडी टू आस्क मोर क्वेश्चंस। पर हमको साथ में ये भी सीखना है, समझना है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछने से सामने वाला इरिटेट होता है, राइट? तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे सामने वाला अपने क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए खुश हो, राजी हो और खुश हो? तो जैसे अगर आप मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप केमिस्ट के पास जाते हैं
और दवाई मांगते हैं और वो आपको क्वेश्चन पूछने लगे, तो आप बोलोगे क्या? बहुत क्वेश्चन पूछते हो, जो बोला है वो दवाई दो ना। पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको क्वेश्चन पूछता है, तो आपको गुस्सा नहीं आता है? आपने कभी डॉक्टर को बोला, ए डॉक्टर दवाई दे दो, इतना सारा क्वेश्चन मत पूछो? नहीं। तो आप डॉक्टर जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको गुस्सा नहीं आता, जब केमिस्ट पूछता है तो गुस्सा आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमको क्या बनना है, केमिस्ट की डॉक्टर? डॉक्टर। और डॉक्टर हमको कहाँ बनना है, हमारे दिमाग में कि कस्टमर के दिमाग में? हमारे दिमाग में तो हम डॉक्टर है शायद, राइट? अभी हम टेक्निकल की कॉम्पिटेंसी की बात नहीं कर रहे, मैं ये गिन के चल रहा हूँ कि आप लोग टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, उसमें मैं अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। और वो तो कंटिन्यूसली डेवलप तो करना ही होता है हर फील्ड में, राइट? तो हम टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को साइड में रखते हुए अगर हम समझ रहे हैं कि भी आप टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो, पर वो आपको कैसे देख रहा है, केमिस्ट के रूप में देख रहा है कि डॉक्टर के रूप में देख रहा है? कस्टमर आपको कैसे देख रहा है? डॉक्टर के नहीं, अभी कैसे देख रहा है जब वो बोल रहा है आपको, राइट? कस्टमर बोल रहा है आपको कि भाई आप बहुत क्वेश्चन पूछते हो, हाँ। तो तभी वो आपको केमिस्ट के रूप में देख रहा है कि डॉक्टर के रूप में देख रहा है? तो मैनेजर को पता होगा कि मैनेजर को फीडबैक मिला है तो, नहीं भाई आप बताओ ना। क्योंकि मुझे तो मैनेजर के फीडबैक मिला है। हाँ। ध्रुव भाई ऐसा है, ध्रुव भाई क्या फीडबैक मिला है? ध्रुवीन भाई आपको कैसे देख रहे हैं, केमिस्ट के रूप में देख रहे हैं कि डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं? आप ध्रुवीन के साथ काम कर रहे हो प्रोजेक्ट में? मैं चंदन एंड ध्रुव सर के साथ। हाँ, तो चंदन और ध्रुवीन आपको कैसे देख रहे हैं, एज ए केमिस्ट देख रहे हैं कि एज ए डॉक्टर देख रहे हैं? एज ए डॉक्टर। नहीं, क्योंकि डॉक्टर को कोई ये फीडबैक नहीं देता कि आप बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपके दिमाग में आप डॉक्टर हो, राइट? लेकिन ये चीज होती है कि डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये डेवलप करना है, तो आप कौन से एंगल से क्या डेवलप करना है वो तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अरे हाँ, तो आपके दिमाग में आप डॉक्टर हो, राइट? यस और नो? यस। यस। पर उनके दिमाग में आप क्या हो? केमिस्ट। यस। तो ये इम्प्रेशन किसको बदलनी है? हमें बदलनी पड़ेगी। राइट। और उसमें एक रोल, उस केस में होता है क्या, वो जो बताते हैं उस तरह से हम डेवलप करके देते थे, तो फिर बाद में उसमें रिवर्क आता है। यस, या आप सही हो। तो बार बार रिवर्क आता है। यस, आप सही हो 100%। उसमें से दोनों का टाइम बिगड़ता है, उसका और हमारा यस, दोनों का। वो तो है ही ना। आप केमिस्ट के पास से दवाई लोगे तो ट्रीटमेंट ठीक होने वाला नहीं है, दवाई तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना चाहिए ना। पर वो आपको एज ए डॉक्टर ट्रीट करे, उसके लिए क्या करना है? मैं मानता हूं कि उन्होंने आपको डॉक्टर ट्रीट कर एज ए डॉक्टर ट्रीट करना चाहिए, मैं मानता हूं। पर उनको क्या कौन समझाएगा? और उनको कैसे समझाओगे कि भी आप केमिस्ट नहीं डॉक्टर हो? वो आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे कि उनको समझ में आए कि भाई आप केमिस्ट नहीं हो डॉक्टर हो? यही तो मैं ऑल फिजिबिलिटी बताता हूँ कि अगर आप इस तरह से डेवलप करते हो तो ये रिजल्ट मिलेगा, अगर इस तरह से डेवलप करते हो तो रिजल्ट मिलेगा। ऑल पॉसिबिलिटीज हम देते हैं। Okay. Good. So we'll pause here, right? We want to complete on time. But everybody, are you realizing what I'm saying? Yes, sir. Consider your managers also do not treat you as expert.
even though you might be expert. And you have to earn your credibility with your managers also. और आपको अपने मैनेजर्स के साथ भी अपनी इंप्रेशन इंप्रूव करनी है, और उसके लिए सिर्फ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं, कम्युनिकेशन वहां भी इंप्रूव करना है. जैसे अभी चंदन ने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया ना, उस तरह से, या आप अलग भी आप सोचो अपनी तरफ से कि भी मैं किस तरह से कम्युनिकेट करूं कि जिससे उनको मेरी एक्सपर्टाइज, मेरी बैकग्राउंड थिंकिंग, मेरा जो पूरा सिचुएशन का अंडरस्टैंडिंग वो उनको समझ में आए, और वो मेरे साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करें, नहीं कि मुझे इंस्ट्रक्शन दे. लास्ट टाइम मैंने एक शब्द यूज किया था, आईटी लेबर या आईटी लीडर, राइट. आज इस बार मैंने बोला केमिस्ट या डॉक्टर, वो दोनों एक ही दिशा में है. सो वी हैव टू बिकम आईटी लीडर, नॉट आईटी लेबर, बट फॉर दैट वी हैव टू improve our communication with our managers also, so that they can see our expertise. They can feel, oh my God, this guy is highly competent. ध्रुवीन भाई को डर लगना चाहिए आपको कम्युनिकेशन करने में. अरे मैं इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, मेरे को उसके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा. वो इतना काबिल है कि उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो वो इंसल्ट होगा. उसके साथ डिस्कशन करना जरूरी है. ओके एवरीबॉडी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा इस पे सोचो, इंटरनली डिस्कस करो, एंड वी विल गेट बैक अगेन नेक्स्ट वीक. बट सी हाउ यू कैन शिफ्ट योर मैनेजर्स परसेप्शन अबाउट यू थ्रू कम्युनिकेशन, एंड डिस्कस विद योर मैनेजर ऑल्सो. अगर आपको मैनेजर आपको एक्सपर्ट देखने लगेंगे तो फिर आपके कस्टमर आपको एक्सपर्ट देखने लगेंगे. पहले तो दोनों जगह काम करो, मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन में और कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन में. You are competent, but let your communication show your competence. Okay, work on it this week, and we will touch base again next Friday. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.